vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuveva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminite Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda. All together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhutai Mad Prema Puravibhur Nirmaya Kshatriya Damusha Purusha Bhakte Ganan Sadasa Sadasatmaka Yalankrishishta Bhagavan Vacham Sime. Hare Krishna. So with the blessings of all the Vaishnavas assembled here and online, we will try to read and say something on the 9th canto of Srimad Bhagavatam. So today we are reading chapter 16, Lord Paraśurāma destroys the ruling class. And we will be reading texts 7 to 9. Text 9 has purport, so we will chant it responsibly. And previous texts I will just read and you can listen. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Vareṇa chadayāmasa prita Satyavatī sutta vabrehatānam ramopi jivitam chasmritim badhe. Translation: Jamadagni, the son of Satyavatī, was very much pleased with Paraśurāma and asked him to take any benediction he liked. Lord Paraśurāma replied, "Let my mother and brothers live again and not remember having been killed by me. This is the benediction I ask." Text 8. Uttasthus te kuśalino nidrapaya ivanjasa piturvidvam stapo viryam ramam chakre suritpadam. Thereafter, by the benediction of Jamadagni, Lord Paraśurāma's mother and brother immediately came alive and were very happy, as if awakened from sound sleep. Lord Paraśurāma had killed his relatives in accordance with his father's order because he was fully aware of his father's power, austerity and learning. Text 9, let's chant it together.
Yarjunasya sutarajan. Yarjunasya sutarajan. Smarantasva piturvadam. Smarantasva piturvadham. Brahmavirya parabhuta. Brahmavirya parabhuta. Lepire sharmana kvachit. Lepire sharmana kvachit. Yarjunasya sutarajan. Smarantasva piturvadham. Brahmavirya parabhuta. Lepire sharmana kvachit. Synonyms, please repeat. Yeah, those who. Arjunasya, of Kārtavīryārjuna. Sutaha, sons. Rajan, of Maharaj Parīkṣit. Smarantaha, always remembering. Swapitu vadam, their fathers having been killed by Parshuráma. Brahmavirya parambhutaha, defeated by the superior power of Lord Paraśurāma. Lebire, achieved. Sharma, happiness. Na, not. Kvachit, at any time. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. My dear King Parīkṣit, the sons of Kārtavīryārjuna who were defeated by the superior strength of Parshuram never achieved happiness, for they always remembered the killing of their father. Purport. Jamadagni was certainly very powerful due to his austerities, but because of a slight offense by his poor wife Reṇukā, he ordered that she be killed. This certainly was a sinful act, and therefore Jamadagni was killed by the sons of Kārtavīryārjuna as described herein. Lord Paraśurāma was also infected by sin because of killing Kārtavīryārjuna, although this was not very offensive. Therefore, whether one be Kārtavīryārjuna, Lord Paraśurāma, Jamadagni, or whoever one may be, one must act very cautiously and sagaciously, otherwise one must suffer the results of sinful activities. This is the lesson we received from Vedic literature. So we'll read the three texts
translations one more time. तो अनुवाद को फिर से हम पाठ करेंगे। हे राजा परीक्षित, परशुराम की श्रेष्ठ No, 7 to 9. 7वें से 9वें का अनुवाद हम फिर से पाठ कर रहे हैं। आप श्रवण कीजिए। 7वें अनुवाद इस प्रकार है। सत्यवती पुत्र जमदग्नि परशुराम से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने कहा, मेरी माता तथा मेरे भाइयों को फिर से जीवित हो जाने दें और उन्हें यह स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा। मैं आपसे इतना ही वर मांगता हूँ। 8वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। तत्पश्चात जमदग्नि के वर से भगवान परशुराम की माता तथा उनके सारे भाई तुरंत जीवित हो उठे और वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो केवली से चले गए। परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपने परिजनों का वध कर दिया था, क्योंकि वे अपने पिता के बल तपस्या कर विद्वत्ता से परिचित थे। 9वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। हे राजा परीक्षित, परशुराम की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा राज्य कारतवीर्यार्जुन के पुत्रों को कभी सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्हें अपने पिता का वध सदैव याद आता रहा। Hare Krishna. So this is a very interesting description of Lord Parshuram and how he was executing his mission of killing unnecessary kshatriyas who were burdening the world and creating a lot of havoc. तो ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग है जहाँ पे भगवान परशुराम जो क्षत्रिय जो अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, कैसे उनका वध कर रहे थे। And specifically, he was killing such kshatriyas like Kārtavīryārjuna, very proud of their strength, and his sons as well. तो वो इस तरह के क्षत्रिय जैसे कि कारतवीर्यार्जुन जो बहुत अहंकारी थे, उनको और उनके पुत्र इत्यादि। And it's been described because we understand that Lord Parshuram is the Shakti avatar of the Supreme Lord, and therefore what he could do, no one would be able to do. तो चूंकि भगवान परशुराम भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, तो वो जो खाली कला पे लीलाएं कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। Parashu means chopper and Ram means very happy, so he was very happy to use his chopper to destroy his enemies. तो परशु का अर्थ है वर्षा और राम मतलब जिसको ऐसा कार्य करने में आनंद आता है, तो वो आनंदित रूप से शत्रुओं का वध करते हैं। So it's been described in the previous chapter that he was fighting with the speed of the mind, and after he became little tired, he started fighting with the speed of wind. तो कहा जाता है, इससे पहले के अध्याय में वर्णन है, जब वे वध करते थे तो मन की गति से वध करते थे, और जब पूर्ण थक जाते थे तो वायु की गति से वध करते थे। And even Kārtavīryārjuna, with his 1,000 hands, trying to shoot him with 500 bows and arrows at the same time, could not do anything to Parshuram. तो कारतवीर्यार्जुन जिसके सहस्त्र यानी 1000 हाथ थे, उन्होंने 500 धनुषों से परशुराम जी को वध करने का प्रयास किया, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कर पाए। And nevertheless, when Parshuram described to his father and brothers how he was killing Kārtavīryārjuna, Jamadagni said, this was unnecessary to kill the king, because king is the embodiment of demigods and it was sinful activity. तो परशुराम के पिता ने कहा, परशुराम ये जो तुमने कारतवीर्यार्जुन का वध किया है, ये तुमने अन्यथा कर दिया है, क्योंकि जो राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। And he said, because you are Brahmana, you're supposed to cultivate forgiveness, and the Supreme Lord is happy with someone who is forgiving. तो चूंकि आप ब्राह्मण हो, आपने दया भावना होनी चाहिए, और भगवान भी उन पर कृपा करते हैं जो दयालु हैं।
And so since you committed so many sinful activities, you have to atone for your sins. तो आपने ये सब पापपूर्ण कार्य किए हैं, परशुराम के पिता ने कहा आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा. And then Parshuram agreed to that, and he traveled around the holy places for 1 full year. तो परशुराम ने ये स्वीकार किया अपने पिता का आदेश और उन्होंने पुण्य स्थानों में या पवित्र स्थानों में या धामों में वे 1 साल तक भ्रमण किए. And so in this chapter it's been described how Reṇukā, the wife of Jamadagni, and of course mother of Parshuram, she became attracted by the king of Gandharvas whom she saw on the bank of the Ganges. तो यहाँ पे वर्णन है कैसे रेणुका माता जमदग्नि की धर्मपत्नी है और परशुराम की माता है, तो कैसे एक गंगा के तट में एक देव राजा से आकर्षित हो गए. And this is Chitra Rath, the king of Gandharvas, and she became attracted to him, she became mesmerized by the sight, and she forgot that she had to bring water in time for Jamadagni to perform the sacrifice. तो जमदग्नि के लिए पानी लाने गई थी रेणुका माता, जो कि यज्ञ में या सैक्रिफाइस में लगता था, तो वो आकर्षित हो गए चित्र राजा से आकर्षित. And then at some point she thought, oh my God, I have to bring the water because if I'm not in time, he might curse me or something. So she ran with the water to bring water to Jamadagni. तो जब वो मोहित थी तो ऐसा विचलित थी, तो उनके मन में आया है जैसे बड़ा पर हो जाना था समय में इसको जल को नहीं लेके जाओगे तो मैं श्रापित हो सकती हूँ. But Jamadagni knew what happened, that she was unchaste in her mind, even though she didn't do anything physically bad, and he became angry. तो जमदग्नि ये समझ पाए कि रेणुका जी ने मानसिक रूप में ही गलत कार्य किया है. And he told his sons, now you have to kill this unchaste lady, your mother. तो उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि ऐसे स्त्री का या तुम्हारे माता का वध कर देना चाहिए. And the sons didn't want to do it, but then he told his youngest son, Parshuram, that you kill your brothers because they disobeyed my order, and your mother also because she committed mental adultery. तो परशुराम जी को जमदग्नि ने पहले अपने बड़े पुत्र को कहा, उन्होंने मना कर दिया. बाद में जमदग्नि ने परशुराम को कहा तुम अपने भाइयों का वध करो, क्योंकि इन्होंने मेरी बातों पर मेरे आज्ञा का अवलंबन नहीं किया है, और साथ ही में अपने माता का ही वध करो. Because he knew that his father was very powerful and he will take full responsibility for this order. तो उनको पता था परशुराम कि मेरे पिता बहुत ही शक्तिशाली हैं, उन्होंने इस आज्ञा का पालन किया. And when we hear or maybe see things like that, normally there is a warning, do not try this at home. जैसा कि हम देखते हैं कभी ऐसे लीला अनुसरण करते हैं कि घर इत्यादि में आपको करने की आवश्यकता नहीं है. There are many things done by great people, but we should not imitate them. महान कार्य महान व्यक्तित्वों को द्वारा किया गया है, जिसको आप अनुकरण नहीं कर सकते हैं या उसको एकदम से करके नहीं करना है. And so from this point onwards, we continue studying this chapter. तो यहाँ से हम अभिवादित And then Jamadagni, as we hear, he said he was very happy that Parshuram did what he told, and he said, now you can ask any benediction from me. तो जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए परशुराम के सेवा से, और उन्होंने तब बोला वरदान आप लोगों से मांगना चाहते हैं. And then Parshuram said, let them
be revived again and not remember that I killed them. तो परशुराम जी ने वरदान मांगा ये फिर से पुनर्जीवित हो जाए लेकिन इनको स्मरण न रहे कि मैंने इतना वध किया. And so they were revived, they felt very happy, and then it's been described that the sons of Kārtavīryārjuna were defeated by the superior strength of Parshuram, but they could not be happy because they always remembered the killing of their father. तो परशुराम जी ने वरदान प्राप्त करके उनके सब भाई पुनर्जीवित हो गए और यहाँ पे एक और भी वर्णन है कारतवीर्यार्जुन की पुत्र कभी सुख को नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि उन्हें पिता का वध सदैव याद आता था. And in order to revenge, we will learn in next verses, they will kill Jamadagni as well. तो ये कारतवीर्यार्जुन के जो बच्चे हैं या बालक लोग हैं उन प्रतिशोध में जमादग्नि का वध करेंगे परवर्ती श्लोकों में इसका वर्णन हुआ. And so we can understand from Srila Prabhupada's purport that Jamadagni suffered because he ordered such a heavy punishment for slight offense. तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमें समझ में आएगा कि ये जमादग्नि का वध इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत ही छोटे अपराध के लिए बहुत बड़ा एक तरह से दंड दिया. And so Srila Prabhupada warns us that we have to be very careful about committing any sinful activity because we have to suffer for the results of our sinful activities no matter how exalted we are. तो प्रभुपाद जी हमको एक चेतावनी देते हैं चाहे पाप पूर्ण कार्य कैसा भी हो छोटा हो बड़ा हो हमें बहुत ही इसको मन में रखना है कि इसका जो प्रत्युत्तर में प्राप्त होगा. And we can see so many examples how the exalted devotees are very, very careful about committing any sinful activities. बहुत सारे उदाहरणों से हम समझेंगे कि कैसे महान महान व्यक्तित्व भी बहुत ही सतर्क रहते थे अपराध करने से. Starting from Bhagavad Gita, how Arjuna in the first chapter of Bhagavad Gita is very careful not to kill anyone. He doesn't want to fight for the sake of kingdom. तो भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन अपना भाव व्यक्त करते हैं कि वो किसी का वध नहीं कर सकते हैं या करना चाहते हैं एक राज्य प्राप्त करने के लिए. So he says, Papam evashraya dasman atatayana. So he said, we should not commit sinful activity, even though killing enemies, we should not be killing them unnecessarily. तो अर्जुन यहाँ पे अपना मत प्रकट करते हैं भगवान को कि वे अन्यथा ही किसी दुश्मन का भी वध नहीं करना चाहते. And it was only when he definitely understood that it was Krishna's plan, then he agreed to fight and kill his enemies. जब तक कि अर्जुन को ये समझ में नहीं आ गया कि ये कृष्ण का ही विकल्प है तब तक उन्होंने युद्ध को स्वीकार किया. Because if Krishna orders something directly, then there is no sin involved. तो कृष्ण के आदेश का अगर आप कोई डायरेक्ट पालन करोगे तो उसमें कोई अपराध नहीं है या पाप नहीं. We can see, for example, all Pandavas were so pious and so devoted to serving Brahmanas, Vaishnavas, and sacrificing themselves for the good of all people. तो हम देखते हैं पंच पांडव लोग कितने धार्मिक थे और उन्होंने वैष्णव का सेवा ब्राह्मणों की सेवा के लिए अपने जीवन को दान किया. Ideal Kshatriyas. उन लोग एकदम आइडियल क्षत्रिय थे. And even though Kshatriyas are allowed sometimes to be diplomatic and not to say things directly, nevertheless, Yudhishthira Maharaj was such a perfect
Kshatriya that he never spoke any lie. तो कभी कैसे क्षत्रियों को कभी-कभी राजनीतिक रूप से भी कुछ चीजें ऐसे वर्णन करनी होती हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कभी भी सत्य को परित्याग नहीं किया. And this is the feature of a Brahmana. Brahmana never speak any lies. तो ये ब्राह्मणों का गुण है कि ब्राह्मण कभी मिथ्याचार या झूठ नहीं बोलता है. And so Yudhishthira was a Kshatriya with qualities of Brahmana, Raja Rishi. और युधिष्ठिर क्षत्रिय थे लेकिन गुण ब्राह्मणों में थे, इसको राजा ऋषि कहा जाता है. So Raja Rishi are the best leaders because they have the qualities of the top two classes. तो राजा ऋषि के जो गुणात्मक रूप से ये जो दो उच्चमय क्लासेस हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय के गुण रहते हैं. And at one point during the Kurukshetra battle, Krishna thought we have to remove Drona from the battle somehow because he is insurmountable obstacle to our victory. तो एक बार कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने विकल्प किया कि अगर द्रोण को न हटाया जाए तो ये युद्ध में एक बाधा है. And he knew that Drona will stop fighting only if he hears that Ashwatthama, his son, is killed. तो उनको पता था द्रोणाचार्य तभी अपना युद्ध को रोकेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया है. And Drona would never believe anyone except Yudhishthira Maharaj because he knew how honest Yudhishthira Maharaj is. तो उनको पता था कि द्रोणाचार्य सिर्फ युधिष्ठिर महाराज पर ही विश्वास करेंगे, तो उनको पता था ये बहुत ही सत्यवादी है. So he told Yudhishthira Maharaj, you have to say loudly, Ashwatthama is dead. तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि अश्वत्थामा का वध हो गया है. But Yudhishthira was still hesitant to lie even after Krishna requested him to do so. तो कृष्ण के रिक्वेस्ट करने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज थोड़ा सा विचलित हो रहे थे. And Krishna said, okay, you are too honest here, so we have to find some solution. And he told Bhima, there is an elephant, Ashwatthama, so you kill that elephant so that Yudhishthira would be able to say that Ashwatthama is dead. तो भगवान कृष्ण के विकल्प से भगवान ने देखा कि ये युधिष्ठिर झूठ बोलेगा नहीं, तुरंत भीम को कहा ये जो हाथी अश्वत्थामा है इसका नाम भी अश्वत्थामा था, तो इसका वध कर दो. तब युधिष्ठिर गया कि अश्वत्थामा का वध. And Bhima killed elephant Ashwatthama, and after that Yudhishthira could say without any hesitation, shout, Ashwatthama is dead. And then he added in the end, the Ashwatthama, the elephant. तो यहाँ पे भी वैसा ही हुआ. अश्वत्थामा के जब भीम ने वध कर दिया तो वध करने के बाद युधिष्ठिर महाराज जोर से घोषणा करने लगे अश्वत्थामा का वध हो गया. उसके साथ उन्होंने एक चीज अपने से ऐड कर दिया या अस्थियां आती. But when he was saying the elephant, I think Bhima, right? He blew. Who was blowing his conch? Who was blowing conch? Krishna blew his conch, right? Yeah, Krishna blew the conch, and no one could hear that it was the elephant. तो जब ये घोषणा हो रहा था युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, जब भी हाथी या मनुष्य के बारे में बोल रहे थे, तभी भगवान ने समझा दिया ताकि द्रोणाचार्य को सब यही समझ में आया कि अश्वत्थामा का वध हो गया. And Drona was thinking, okay, my son, he couldn't believe it, but he was bewildered. Ashwatthama is dead, so he could not continue fighting. तो उनको विश्वास नहीं था, लेकिन वे एक तरह से विचलित हो गए उस समय. And because he was bewildered, he stopped fighting, so there was an opportunity to kill him. तो जब
And so what was the name of Drishtadhyumna, right? Yeah, the son of Drupada Maharaj. That Drishtadhyumna took the opportunity to kill Dronacharya at this time. But then it's described in Mahabharata that before Yudhishthira Maharaj's chariot was above the ground, so it was flying in the air because he was so pious. But after he said Ashwatthama is dead, then his chariot started, going on the ground as everybody else. And there are different commentators on Mahabharata, and those who follow the karma kanda mentality, they say that Yudhishthir's chariot started bouncing off the ground because he told the lie, even though it was not directly, but still, he knew that this is the trick, and he took part in this trick to defeat Drona, and that's why his chariot started bouncing on the ground. But Vaishnava commentators, they say no, that his chariot started bouncing on the ground because he didn't want to do what Krishna told him to do. Because everything depends on Krishna. Krishna gives all opportunities and he takes all opportunities from everyone. Therefore, if Krishna wants something, then there is no sin involved and we can peacefully do what Krishna tells us to do. But otherwise, we have to be very, very careful about everything. We can see so many examples. For example, Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was in Puri, and after, his lunch, he was taking rest, and his personal servant Govinda, he was giving him massage before he was taking rest. And one time, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very, very tired, and he was laying down in his room in Gambhira, and this room is very small. I believe many of you have been to Jagannath Puri and seen Gambhira, Lord Chaitanya's room. How many of you have been to Puri and seen Gambhira? And so Lord Chaitanya was lying across, and he was very big, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he blocked the passage for Govinda, and Govinda said, "My dear Lord, can you please move so that I could enter the room and give you massage?" And Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "I'm sorry, I'm very tired, I cannot move."
So you do whatever you want, but I cannot move. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं बहुत थक रखा हूँ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, हमको जो इच्छा है। And Govinda was thinking what to do. Then he took a chadar and he put chadar, covered Lord Chaitanya Mahaprabhu's body with chadar, and he stepped over Sri Chaitanya Mahaprabhu, went into the room, and he gave him massage. तो गोविंद ने क्या किया, अपना चादर लिया, चैतन्य महाप्रभु ने रखा, उनके ऊपर से गए, उनके दूसरे चरण की भी सेवा की। And Sri Chaitanya Mahaprabhu had nice rest, and when he woke up, he saw Govinda still sitting in the room. तो चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छा अपना क्या कह सकते हैं आराम किया उन्होंने, और जब वो उठे तो देखते गोविंद जी भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। He said, "Why are you still sitting in the room? You're supposed to go and take your prasadam." तो बोला गोविंद अभी भी क्यों यहाँ बैठे हो, तो जाकर प्रसाद ग्रहण करना है। Jagannath Mahaprasad. जगन्नाथ महाप्रसाद। And Govinda said, "How can I go because you are lying across the room? I cannot step over you to go to take prasad." तो गोविंद ने कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, आप लेटे हुए हैं, मैं आपके ऊपर से कैसे जा सकता हूँ। And Sri Chaitanya Mahaprabhu said, how did you got into the room? तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया, तो फिर तुम आप मेरे कमरे में किस तरफ कैसे आ गए। Govinda said, "I had to step over your body to get into the room." तो महाप्रभु ने कहा मुझे इस कमरे में प्रवेश करने के लिए आपके ऊपर से मैं जाना पड़ा। So what's the problem? If you stepped in, what's the problem to step out? चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करते हैं जब सेवा के लिए अंदर गए तो फिर से ऊपर से जा सकते थे। He said, "I stepped in for the sake of your service, but stepping out for the sake of my prasad, I'll never do that." तो उन्होंने कहा मैं सेवा के लिए आपके ऊपर से चला गया, लेकिन अपने प्रसाद ग्रहण करने के लिए मैं कैसे जा सकता हूँ। So we can see perfect examples of these great Vaishnavas. They are ready to do anything and everything, even go to hell for the sake of pleasing the Lord, but they will not do anything for their sense gratification. तो ये मुझे उदाहरण है जहाँ पे देखा जाता है कि भगवान की सेवा के लिए कोई नर्क में जाता है, उसके लिए तैयार है, लेकिन वो अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं। And of course, we can see the example of gopis of Vrindavan. There is very famous story how Krishna had headache and he needed some dust from his devotees' feet to relieve his headache. वृंदावन में बहुत अच्छी लीला है जो हम श्रवण करते हैं कि गोपियाँ एक बार अपने चरण धूलि भी दे देती है भगवान को जब भगवान का स्मरण होता है। And nobody wanted to give the dust, but when Narad Muni approached gopis, and gopis said, "Oh yes, take as much dust as you want, you take all our dust." तो नारद मुनि बहुत जगह गए थे भक्तों की चरण धूलि लेने के लिए, इन्होंने भी नहीं दिया, सब गोपियों ने बोला जितना चाहिए उतना उठा के दिया। And Narad Muni was shocked. He said, "Don't you know that you can go to hell by giving dust from your feet on Krishna's head?" तो नारद ने कहा हे गोपियों तुम्हें पता नहीं अगर आप चरण धूलि दोगे कृष्ण को तो आपको संसार चले आओगे। But then gopis said, whether we go to hell or not, it doesn't matter. Most important thing that Krishna gets free from his headache, becomes free from his headache. तो उन्होंने कहा कहीं भी जाए हमें इससे कोई लेन-देन नहीं है, बस हमारा इच्छा यही है कि कृष्ण का सर्वदर्द हो जाए। So we can see the examples of all the great devotees that they are ready to do anything and everything for the sake of serving the Lord, but they will be very careful to do anything for their sense gratification. तो देखा गया है भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी इसका विपरीत अपने इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी नहीं। Anyone can think of example from Srila Prabhupada's life, how he was ready to do whatever
necessary for the sake of serving the Lord, but he was very, very careful about his personal sense gratification. तो हम प्रभुपाद जी को उदाहरण से भी देख सकते हैं। प्रभुपाद जी बहुत ही सतर्क थे। अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया ईश्वर के कृष्ण के सेवा में। Anyone can. कोई और उदाहरण है जहाँ पे आप देख बता सकते हैं प्रभुपाद जी के लीला से? There are so many examples. Anyone can think of. उदाहरण है। Anyone can think of any Srila Prabhupada's example. कोई प्रभुपाद जी का ऐसा उदाहरण दे सकते हैं? We have microphone here. माइक्रोफोन भी है। जय माता प्रभुपाद। Yes, Vaishnavas try to avoid the association of Mayavadis. But Srila Prabhupada, when he went to America for the purpose of, when he went to New York, he gave the association of the Mishraji. So Vaishnavas would always avoid it, but Prabhupada, for a purpose of delivering even a Mayavadi, he took and he has set an example that how merciful a Vaishnava would be. Yeah, he was serving Mayavadi personally, that Dr. Mishra. He was cooking for him. तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि जनरली वैष्णव लोग कोई मायावादियों का संग नहीं करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, उन्होंने डॉक्टर मिश्रा जी जो कि मायावादी थे, उनका भी संग किया। क्यों? क्योंकि उनको भगवान की सेवा में बहुत रुचि थी। Yes, very good example. बहुत अच्छा उदाहरण है। और भी बहुत उदाहरण दे सकते हैं। We can see from Prabhupada life, like any sages, never use any place where drunkards, where drug addicts, correct? These all lusty people are there. But Prabhupada even keeping his vegetarian prasadam in fridge where meat and eggs were there. So this is the exemplary example for such a great sage who nobody have done before that. Hare Krishna. Good. तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जनरली देखा जाता है वैष्णवता के साधु भी ऐसे कुसंस्कृत जगह में जहाँ पे नशा हो, जुआ हो, अवैध संग हो या मांसाहार हो, वहाँ पे जाए भी ना, सोचे भी नहीं इसके बारे में। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना के प्रचार के लिए उनके जो जहाँ थे, जहाँ फ्रिज में भगवान के भोग के लिए जो भी वस्तुएं थी, उसी फ्रिज में था जहाँ पे मांस। हम देख सकते हैं कि ऐसे और वो जिस जगह में भी थे, वो भी जगह एक तरह से वर्जित है। Good. Somebody else? और भी उदाहरण Maharaj ji, when Prabhupada ji was printing books for Krishna, but he used to skip his breakfast. He used to skip his breakfast so that he can print the books. तो ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है कि प्रभुपाद जी इवन ब्रेकफास्ट में नहीं लेते थे, क्योंकि उनको ये Yes. ग्रंथों का जब कंकन करना या प्रिंटिंग करना। And he skipped his sleep to translate the books also. और उन्होंने अपने गीत का भी परित्याग कर दिया, जो हमको बहुत प्रिय है ना। Very good. उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया, कृष्ण भावना में थे। प्रचार के लिए ये बात ये सब हुई है। Good. Somebody else? और एक उदाहरण बात Behind. Hare Krishna. Maharaj, at the age of 67 we read, at that age he went to preach the holy name and having so much difficulty on his health conditions. I think for any normal person, or I mean this is only possible because of the greatness of a sage. तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जिस आयु में गए विदेश में प्रचार करने के लिए और प्रसार करने के लिए, उस आयु में सब लोग क्या करना चाहते हैं? शांति चाहते हैं, आराम चाहते हैं इत्यादि। एक बहुत अच्छा उदाहरण। Yeah. Hare Krishna. Prabhupada ji till last breath
he was trying to fulfill his master's mission, his guru's mission. He was continuously translating Srimad Bhagavatam. Till his last breath, he was trying to do more work. So this is a rare example you may find. एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि प्रभुपाद जी आखिरी सांस तक क्या कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे और ट्रांसलेट करने का प्रयास कर रहे थे। अभी हमारे टेबल कॉर्नर ने एक अच्छा उदाहरण दिया कि रशिया में भक्त जब जेल में थे तो प्रभुपाद जी ने कहा जो मिलता है खाओ, लेकिन प्रचार प्रसार करना है और वहां से निकलना है। ये भी अच्छा उदाहरण। Hare Krishna. There comes one of the devotees. He was carving the deity of Jagannath, I believe. I was still smoking on that. He'll put his cigarette on the deity's side. He's still smoking and carving. But Prabhupada just kind of asked him not to do it because he was making the deity of the Lord Jagannath that time. एक उदाहरण भी है, प्रभुपाद जी इतने सहनशील थे कि उन्होंने उन भक्तों को भी सहा जो कि एक तरफ से जगन्नाथ जी के विग्रहों का रूप दे रहे थे और वो साथ में सिगरेट भी पी रहे थे। उन्होंने प्रभुपाद जी को सहा, लेकिन Very good. So many examples of Srila Prabhupada's sacrifice. बहुत सारे उदाहरण प्राप्त हुए हमको प्रभुपाद जी के इस ज्ञान का। And let's also think of examples of Srila Prabhupada being very, very careful in order to avoid unnecessary breaking any rules. और यहाँ पे हम और भी इसके बारे में हमारे चिंतन कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत ही सतर्क थे, कोई भी नियम का भंग करना, कोई भी नियम भंग ना हो जाए। तो उदाहरण ऐसा। Even though, of course, he had to, cancel certain rules as per strict Vedic standards in order to preach, but still, the principal things he never bent, he never deviated from the principal rules. प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी ने कभी भी नियमों का भंग कभी नहीं किया, लेकिन हाँ नियम से प्रसन्न ऐसा प्रभुपाद। Anyone can think of any examples? For example, is previously devotees used to chant many rounds, but to teach Prabhupada lesson led to 16 rounds. Okay. Microphone. Srila Prabhupada compromised for the sake of devotees from 64 to 16 rounds. But 4 regulative principles, he did not reduce it. Yes. Big danger. Hare Krishna. Very good. Yes, that one time, one devotee said, Srila Prabhupada, illicit sex is such a difficult, thing to give up for Westerners. And if we just remove illicit sex, only 3 principles, you will have so many followers, so many people will come join the movement. Let's just, relax, remove this illicit sex, no illicit sex. And Prabhupada said, I cannot do that. If you want to make your own movement with 3 principles, you can do it, but I will not do this. प्रभुपाद जी बहुत कठिन है, अगर स्त्री संघ को छोड़ना, तो आप कृपा करके ऐसा कीजिए कि 3 नियम पालन करेंगे, 14 नियम को अगर आप छोड़ देते हैं, तो आपके बहुत सारे नहीं हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप नई संस्था चाहते हो, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन हमारे संस्था में 4 नियमों का पालन होगा ही। So generally sannyasis would not participate or ask their disciple to get married, something like that. But Srila Prabhupada did that. Being a sannyasi, he ordered his disciples to get married. And in India, he was very much criticized that sannyasis taking part in the marriage of disciples.
या इसका मनोरंजन भी नहीं करते हैं, लेकिन देखा जाता है श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य शिष्याओं का विवाह भी करवाया, जिससे कि भारतवर्ष को काफी निर्दिष्ट हुए। Yes, he was very lenient about this because the main rule is to help disciples to continue practicing Krishna consciousness. For this sake, he was ready to make any exceptions. तो श्रील प्रभुपाद इस चीज की महत्वपूर्णता को समझते थे कि अपने शिष्य शिष्य ये सब कृष्ण भावनामृत को में प्रगति करें, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस क्या कह सकते हैं So this is very important. He was very, very strict in principles, but when he was applying the principles to individuals, he was very personal. तो हम देख सकते हैं नियम कानून का पालन करने के प्रभुपाद जी बहुत ही सतर्क और बहुत ही एकदम स्टडी थे, लेकिन बाकी जो क्या कह सकते हैं उनको लीनियंसी उन्होंने अपने शिष्यों को दी, taking into consideration their individual, capacity. एक व्यक्ति के शक्ति अनुसार ही उनको सेवा दिया। We call it hard as thunderbolt and soft as rose. Hard as thunderbolt. और ऐसे जैसे वज्र की तरह कठोर, Soft as rose. और गुलाब की तरह Soft as butter, मक्खन की तरह। Hare Krishna. Prabhupada gave us name of ISKCON, International Society of Krishna Consciousness. In initial time, many disciples suggested, can we have God consciousness? Then many Christian and many other people will join and we will have very big follower. But there also Prabhupada clarified, when I know my father name, then how I can change my father name? So I know my father name is Krishna, so I have to keep Krishna only. Thank you. Yeah. एक और उदाहरण है जहाँ पे प्रभुपाद जी सजेशन दिया गया था कि हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो नाम है उसको भगवान का आपने दिया है, कृष्ण को गॉड कॉन्शियसनेस करें। Yeah, he said, God consciousness, God is Krishna, so it is Krishna consciousness. उन्होंने कहा भगवान चेतना भगवान कौन है, कृष्ण है, अपना नाम कृष्ण भावनामृत है। We want everyone to know that Krishna is the original Supreme Lord. क्योंकि सबको बताना है कृष्ण की परम पुरुषोत्तम भगवान है। Hare Krishna. Prabhupada ji, in fact, to Westerners also, he gave Brahman Diksha. There was lot of resistance in India how Westerners can become Brahmana. So Prabhupada ji followed as per Shastra what Brahman qualities are there. Based on that, he followed that strictly that principle to give Brahman Diksha. और ये ब्राह्मण दीक्षा के बारे में प्रभुपाद जी ने पश्चिम देश के निवासियों को भी भक्त बन गए थे, पाश्चात्य भक्तों को भी ब्राह्मण दीक्षा दिया, जिसका बहुत ही आरोप विरोध हुआ। Yes. One very important example I was thinking is, Prabhupada was very heavy sometimes about saying things as they are, directly saying things as they are. प्रभुपाद जी बहुत ही दृढ़ थे और बहुत ही क्या कह सकते सतर्क थे कि वे जो चीज जैसा है उसको वैसा। And sometimes he would say that my god brothers, they are not helping me but try to, do some problems because they are envious of me. कभी प्रभुपाद जी कहते थे मेरे गुरु भाई ऐसे निष्ठा करते हैं, इसलिए ये सब बात होता है। But when one disciple said, Srila Prabhupada, your god brothers are envious of you, Prabhupada was very angry. और जब उन्हीं के शिष्य ने एक बार ऐसा कहा, प्रभुपाद आपके गुरु भाई लोग आपसे इशारे कहते करते, प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हुए। He said, they are my god brothers and not your god brothers. So I can criticize, but you cannot criticize. तो प्रभुपाद जी बहुत ही दृढ़ता से और क्रोध से बोले कि ये
So he was teaching this very important principle of, not to find any fault. And even sometimes in his classes, he would criticize someone, but he would never say the name of the person. Because he said, we criticize character and activities, but we do not criticize person per se, so we should not say the name. Yeah, because absence of fault finding is very important quality for Brahmana and Vaishnava. Okay, so what time do we finish? Should be finishing now. Yeah. Okay. So thank you all very much for your kind participation, and looking forward to see you in 3 hours for the Sunday Feast program as well. Hare Krishna. And there is an important Vaishnava principle, Madhurena Samapayat. Everything has to have very sweet finish. And so we remembered Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri today, and as well as Jagannath Prasad. And before coming to Mumbai, I was in Jagannath Puri. And I brought some Jagannath Mahaprasad with me. So those who are interested, you can come and have some Jagannath Mahaprasad after the class. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Jagannath Swami ki jai, Nitai Gaur Premanande.